about the automata, what are their application, why we study this theory of computation course. Today we सर आवाज नहीं आ रही है। सर हाँ सर चले गए, आते होंगे दोबारा। as we all know that alphabet is a finite sequence of any input. It's called an alphabet there, or we definitely in those codes we denote alphabet by the sign that is called summation. So if we say that summation is equal to a comma b, this means we have two alphabets, one is a and one is b. So we name the set alphabet denoted by summation or any other name, but we always use the capital letter to name the set, and the alphabets we denote by a small letter and separated by comma. So alphabet basically is a finite set of symbols, you can say, is called an alphabet. Then we have the term is called string, or you can say a word. So a word basically, or a string, is a finite sequence of alphabetic symbol. For example, a comma b is an alphabet, then one alphabet is an a, another one is b. So we form multiple strings or word that comprises of a and b, that the finite sequence of alphabetic symbol like single a or single b or double a or triple b, a b, a b, a double b, a b, and so on. And then we have the third thing is called the language. Generally language is basically an infinite there, but when we use in computer systems or computer model, then we converted that language by applying some rules into a finite language there. Generally a language is an infinite there. So language kya hai? Language basically is a sequence of strings or words over some input alphabet. What is the definition of language? Language is a sequence of word or a string over some input alphabet. That is called a language. If we can say that we form a language over the alphabet of a comma b, then we have maybe like a, single a, and single b. We separated the language words separated by space. A is another word or a string, b is another word or a string, or we use double a and maybe a b, a b. So these are all that lead to infinite sequence there. So language generally is an infinite there. Another definition is called the functions. Function that applied on the language set or any strings or alphabets. Uh, the basic function is called the length function. Length basically is the count of the string there. For example,
if we say that what is the length of 1 minute, length of what is the length of AB? क्या होगी length इसकी? 2. 2. And what is the length of this? It can be maximum 2, sir. 4. No. It should take a product. हम product लेके इसको करेंगे ए लिहाज से मल्टीप्लिकेशन होगी. No, simple words या characters को count कर लें. 4. No, 4 नहीं. I think brackets भी count होंगे. 6 होगी सर. तो ये ओपन ब्रैकेट है, शायद इसके अंदर कंटिन्यूटी भी आ सकती है. Continuity. Like हम सिर्फ यहाँ 2 तक स्टक नहीं कर सकते. It can be 3, it can be 4, it can be, but no, it should be a multiple of 2. Like the second bracket है, इसके अंदर multiple of 2 होंगे. 2, 4, 6 इस तरह चल सकते. No. जो opening the opening bracket is basically these, and we have 1, 2, 3, 4 and 5, 6, 7, 8. The length of this is 8. सर अगर इसका रेंट इसकी लेंथ अगर आप 8 कह रहे हैं तो आपने जब ऊपर में लिखा था ब्रैकेट ओपन A and B तो उसको हमने 2 क्यूब कंसीडर किया. या तो इसकी 6 होगी या उसकी 2 4 होगी. Wait. The first example. Yes sir. First example only contain 2 alphabet A and B, and they have only 2 braces. One is the starting braces and other one is the ending braces. That is the part of the syntax here. Here we have about one starting and ending bracket. You can say that is the syntax of the length function, but in the inner bracket is basically have the storage in the memory. When you store that in the memory, that is a special character there. So that is basically count in the length function there. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 8. Okay. So the length of the this thing is 8. Another is called the null string. Null string we denoted in this course like either on this way, or you can say on this way. These are the representation of null string. Null string is that string which have a length 0. And when we put the null string in the function of the length, that return is 0. So the length of the null string is 0. Another function is called reverse. So reverse basically is for example, what is the reverse of AB? That is BA. And what is the reverse of triple B? Same triple B. Same triple B. Same आएगा सर. Same. So, and what is the reverse of 101? Same sir. 101. So
any string when we read in a reverse form, and that the string if remains same, that is called a palindrome. तो उसे हम क्या कहेंगे, palindrome कहेंगे. तो 101 BAB, triple A, double B, like this. When we reverse the string and the string remains same, that is called a palindrome. So हम palindrome कहेंगे. Now, for example, if we have the input alphabet 0, 1, and for example, we say that we have to form a language over the alphabet 0, 1 that comprises of the palindrome and have a length 3. We have to form a language over the input alphabet 0, 1 having palindrome of length 3. यानी हमें एक ऐसी लैंग्वेज बनानी है जो कि 0 और 1 पे बेस कर रही हो और जिसमें उस लैंग्वेज में पैलिंड्रोम्स होने चाहिए और वो पैलिंड्रोम जिनकी लेंथ 3 हो. तो नाउ अब वी अप्लाई जनरली अगर हम ये कहते हैं कि वी हैव टू फॉर्म अ लैंग्वेज ओवर द इनपुट अल्फाबेट 0, 1, so that leads to an infinite language here, that starting from null that contain only 1 length and 2 length, 3 length, string 4 length and 5 and up till infinite here. But when we apply certain rule, like we say that the language contain only palindrome and another rule that is said that only contain the length that is 3. So for example, now we converted that language into a finite language. So here we have 0, 0, 0, triple 0, and we have triple 1. We have 1, 0, 1. We have 0, 1, 0. So these are, this is called the, now we close the bracket, that is a finite language. Understand? Yes. नहीं, ये तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था ना कि भाई लेट्स सपोज वी हैव टू फॉर्म अ लैंग्वेज ऑफ पैलिंड्रोम हैविंग लेंथ 3. अगर आपसे कहा होता कि वी हैव टू फॉर्म अ लैंग्वेज दैट हैव अ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 3, तो उसमें पैलिंड्रोम की शर्त नहीं है. उसमें फिर ये है कि और भी स्ट्रिंग आ सकते हैं 3 लेंथ वाले. Sir, 1 1 1 1 2 1 1 3 1 like this. नहीं, 1 2 1 नहीं आ सकता बिकॉज 2 इज नॉट द पार्ट ऑफ द अल्फाबेट देयर. 0 और 1 की कॉम्बिनेशन में लाइक 0 1 0 आ सकता था. 0 1 0 तो यहाँ है. 0 डबल था, 1 डबल 0 आ सकता था. ठीक है, 1 1 0 आ सकता था. ये वाले आ सकते हैं. 0 0 1 आ सकता था अगर पैलिंड्रोम नहीं लिखा होता और सिर्फ ये होता कि लेंथ 3 वाले वर्ड्स होने चाहिए. Then we have some basic concept. You already know that the string concatenation. String concatenation means when we combine two strings. After one string, we join another string from the start till end. That we call the string concatenation. Like if we have x equal to x equal to data and y equal to base. So if x equal to data and y equal to base, then if we say that x concatenate with y, this is called database. What is the value of this? Data
base. And what is the value of if y concatenate with x? Base data. Base data. So in a string concatenation, xy is not equal to yx. That is not equal to y, because in a string concatenation the order is important, because AB is not equal to BA. So xy is not, any database is not equal to base data. So another thing is what is the identity element over the string concatenation? What is the identity element over the string concatenation? empty set. सर ये x और y जो है कॉन्कैटिनेट हो रहे हैं, तो सर ये तीसरे वेरिएबल के अंदर कॉन्कैटिनेट होंगे ना, x और y जो दो जब भी डुअल कॉन्कैटिनेशन होती है तो एक वेरिएबल के नहीं, अंदर होती है। x एक अलग वैल्यू थी जिसकी वैल्यू हमने दी थी डेटा, और y एक अलग वेरिएबल था। हमने कहा x अगर y के साथ कॉन्कैटिनेट होगा तो वो बनेगा डेटाबेस, और अगर y x के साथ कॉन्कैटिनेट होगा तो वो बनेगा बेस डेटा। और हमने ये कहा कि एक्स वाई इक्वल नहीं होगा वाई एक्स। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ओवर द स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन? नो। लैम्बडा। लैम्बडा किसको कह रहे हैं आप? एम्प्टी होता है जो वर्सेट में एम्प्टी को, ठीक है। सो अच्छा, एम्प्टी को अभी हमने कहा था नल स्ट्रिंग। तो null string basically is the identity element over string concatenation, because one is the multiplicative entity. One is that number, when we apply one with any number, the number remains same. So one is called the multiplicative entity, and zero is called the additive entity, because when we add zero in some value or some number, the number remains same. So zero is considered as the additive entity. One is considered as multiplicative entity. So null string is the identity element over string concatenation, because when we concatenate null with any string, or we concatenate the string with a null, the string remains same. So null string is that string which have a length 0. When we concatenate the null string with any string, the string remains same. ना उसकी शेप पे फर्क पड़ेगा, ना उसके ऑर्डर पे फर्क पड़ेगा, ना उसकी लेंथ पे फर्क पड़ेगा। क्लियर? Yes, sir. Now we have some basic parts of a string. We just excuse me, ये एक दफा 1 का और 0 का दोबारा से बता दें कि 1 अगर स्ट्रिंग से होगा नहीं, 1 स्ट्रिंग से नहीं होगा। मैं एग्जांपल दे रहा था कि आइडेंटिटी एलिमेंट मैंने आपसे पूछा था ना, तो मैं उसकी एग्जांपल दे रहा था कि अगर हम एडिटिव आइडेंटिटी किसी से पूछते हैं कि भाई एडिटिव आइडेंटिटी किसको कहते हैं, तो एडिटिव आइडेंटिटी हम 0 को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि 0 को हम किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो नंबर रिमेन सेम रहता है। सिमिलरली 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है, बिकॉज 1 को हम किसी भी नंबर में ऐड करेंगे, 1 जो है वो द नंबर रिमेन सेम। So similarly, null string is that string when we concatenate null string with any string, the string remains same. So that's why the null string is considered as the identity element over string concatenation. Okay, sir. हाँ, अगर हम parts of string की parts of string की बात करते हैं, तो have like मैं इसमें लिख तो नहीं सकता अभी यहाँ पे क्योंकि मोबाइल पे, like number 1 is called prefix. As we all know that prefix of any string, what is called prefix of the string? सर प्रीफिक्स के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं वो अलग से शो हो जाते हैं, मतलब आइडेंटिटी के ना एक एक एलिमेंट जो है ना, जितने भी स्ट्रिंग के अंदर ए बी सी डी है तो पहले नल आएगा, फिर ए, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी डी।
चल ऐसे So तो how we prefix करके show कर। define the prefix value is called the any string by sorry we can say that by removing the you can say the अगर आप स्टार्ट में से किसी भी स्ट्रिंग के स्टार्ट में से या तो 0 या मोर कैरेक्टर रिमूव कर दें तो जो आपके पास पार्ट ऑफ स्ट्रिंग बचता है फॉर एग्जांपल आपके पास स्ट्रिंग है डेटाबेस तो व्हेन वी remove 0 or more character from the trailing end from the end यानी फॉर एग्जांपल हम end से e हटा दें s हटा दें a हटा दें b हटा दें फॉर एग्जांपल हमने ये 4 अल्फाबेट हटा दिए तो वी हैव क्या पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग में से क्या बचा डेटा तो डेटा इज कंसीडर्ड एज द प्रीफिक्स ऑफ डेटाबेस if we remove only e and s so we have data BA. So DATA BA is considered as the prefix of database. So prefix is formed by deleting. आप चाहें तो लिख लें definition. Prefix is formed by deleting one or more
B from database, the remaining part is from A, T, A, B, A, S, E. This is called the suffix of database. When we remove D, A, T, A data, then we have the part of the string remain, that is base. The base is a suffix of database. Another third part of the रिपीट कर string. देंगे, थोड़ा सा सेशन एंड हो गया था सर प्रीफिक्स के बाद.